हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ्स रीथ एकेडमी। तो हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का पेपर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास के अंदर लेबनीज थ्योरम की बात करी थी कि कैसे दो प्रोडक्ट फंक्शंस को हम उसका nth डेरिवेटिव हम कैसे लिखते हैं। उसके लिए एक फार्मूला लेबनीज जी ने दिया था और फिर हमने उसका प्रूफ भी लिखा था एंड वी प्रूव्ड दैट थ्योरम आल्सो। वो एक एग्जाम्पल भी करा था। आज कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे लेबनीज थ्योरम का यूज करके। तो लेट अस डिस्कस एग्जाम्पल वन बाय वन। ओके, so let's start example 2. So this is example 2 is what differentiate differentiate the equation 1 plus x square y2 plus this is x of y1 is just equal to 0. This is n times. N times. Okay. So differentiate the equation 1 plus x square y2 plus x of y1 is equals to 0. सो n टाइम्स इसका हमें डिफरेंशिएशन लिखना है। यहाँ पर y2 और y1 का मतलब है कि वन टाइम डिफरेंशिएट हो चुका है y। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, या यू कैन से दिस इज d ऑफ y इज y1 एंड दिस इज d2 ऑफ y is just equal to y2. This is representation of the first order and second order derivatives. Okay. So let's start by the Leibniz theorem. Since this is given 1 plus x square and this is of y2 and plus this is x of y1. So that is equals to 0. So from Leibniz theorem, we can able to write from Leibniz's theorem। उस फार्मूले को हर एक क्वेश्चन में एक बार जरूर लिखे हम लोग। तो nth डेरिवेटिव ऑफ द टू प्रोडक्ट फंक्शन u इंटू वी इज जस्ट इक्वल टू व्हाट u nth derivative of v and plus nc1 and then first order derivative of u, and this is n minus 1th order derivative of v, and so on. In the last there will be the nth derivative of u, and this is v is multiplied. Okay, so this is the nth derivative. So taking I'm just writing here, taking nth derivative of वन वन इक्वेशन का nth डेरिवेटिव लेते हैं। तो इट मींस दिस इज nth डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन 1 plus x square and this is of y2। okay, and plus this is nth derivative of x into y separately it will be distributed। okay, so it will be remain this thing। ओके, तो अब इसमें आपको देखना है कि इसको हम एज ए यू मान ले रहे हैं, दिस इज एज ए यू, और दिस इज अ वी। यहाँ पर भी हम इसको यू और इसको वी मान रहे हैं। तो हम अप्लाई कर रहे हैं आपका nth डेरिवेटिव का फार्मूला बाय द लेबनीज थ्योरम। सो बाय लेबनीज थ्योरम यू कैन जस्ट राइट by Leibniz theorem. So this implies what? This is 1 plus x square. It will be remain the same first function, and nth derivative of second function. It means y2. Okay, plus uh, nc1 and nc1 and first order derivative of 1 plus x square, and then n minus 1th order derivative of y2, and plus this is nc2 and this is second order derivative of 1 plus x square, and this is n minus 2 of y2। okay, and then you can see clearly कि जब हम, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, इससे ज्यादा बार कोई भी अगर हम डेरिवेटिव लिखने जाएंगे तो टर्म क्या हो जाएगा? जीरो, है ना। सो इसके बाद के सारे टर्म्स जीरो होंगे, तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट दैट टर्म। हम फिर सेकेंड टर्म को डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो इट विल बी व्हाट, दिस विल बी, दिस इज इक्वल्स टू
first function, it means x, this is nth derivative of y1, and plus this is nc1, and the first order derivative of x, and this is tn minus 1 of y1, एंड फिर इसके बाद का टर्म्स हमारे पास क्या रहेंगे, जीरो, बिकॉज यहाँ पर 1 डिग्री है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विल बी द जीरो. ओके, एंड सो ऑन. तो दिस implies what remaining here, 1 plus x square is there. ओके, dn. तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 टाइम्स ऑलरेडी हम y को डिफ्रेंशिएट कर रखे हैं, और n टाइम, तो इट विल बी y ऑफ n प्लस 2. आप इसको ऐसे लिखेंगे, है ना, प्लस nc1 का वैल्यू होती है n. ओके, d1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव करेंगे तो इट विल बी 2 ऑफ x. ओके, एक्स स्क्वायर का 2x, और इसका हमारे पास हो जाएगा, दिस इज y ऑफ n प्लस 1, बिकॉज n माइनस 1 प्लस 2 इट मीन्स n प्लस 1. यहाँ पर हो जाएगा, दिस इज योर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2. दिस इज द nc2, वैल्यू ऑफ द nc2. इसका आप जब 2 टाइम्स करेंगे तो 2x एंड देन 2, इट रिमेनिंग हियर, ओनली 2 इज रिमेनिंग हियर, एंड यहाँ पर ये हो जाएगा yn, बिकॉज y2 एंड n माइनस 2 टाइम्स डेरिवेटिव लिख रहे हैं, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा x, और इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो x टाइम्स y ऑफ n प्लस 1, और यहाँ पर हो जाएगा, दिस इज योर n, दिस x का तो डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा yn. ओके, दैट इज इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास, मैंने और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ y ऑफ n प्लस 2. ओके, एंड here you can just take plus of इस 2 से आप 2 कैंसिल कर सकते हैं, यू कैन कैंसिल इट आउट, एंड ये वाई एन प्लस 1 है, यहाँ पर वाई एन प्लस 1 है, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, दिस इज 2nx is there and plus of x is here. Taking this outside, it will be y of n plus 1, and plus ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n, और यहाँ पर प्लस का है, दिस इज प्लस ऑफ n, और इसमें से हम क्या बाहर ले रहे थे, y n, आई एम जस्ट टेकिंग आउटसाइड. तो व्हाट इज रिमेन्स, एक्चुअली दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, and this is a y of n plus 2, and plus this is 2n plus 1, and this is x of y of n plus 1. Okay, and plus it will be n square is remaining here, this is yn. So this yn means nth derivative of y, है ना. इसी तरीके से n plus 1th derivative and n plus 2 second derivative of this y. So this expression we get. So if when we are calculating the nth derivative of this expression 1, है ना, जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था, तो we will get this result. Okay, this one. तो दिस इज योर आंसर एक्चुअली. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं. तो एग्जांपल नंबर 3, इसमें इन्होंने फंक्शन दिया हुआ है, कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया है, फंक्शन इज गिवन, उसका हमें, उसके लिए हमें एक इक्वेशन देखनी है. सो तो हियर if this is y is equals to sine inverse of x, okay, then show that if y is equals to sine inverse of x, then show that 1 minus x square of y of n plus 2, okay, and minus of 2n plus 1 of x of y of n plus 1 minus of n square, this is of yn, is just equal to 0. Okay, so we have find this expression, है ना, for the nth derivative and so on. तो सबसे पहले हम एक चीज दे रहे हैं कि हमें nth डेरिवेटिव लिखने से पहले इसका मतलब है कि n प्लस 2th डेरिवेटिव हमें चाहिए. तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिख लेंगे,
then we will go for the nth derivative formula. Okay, तो we will use here the Leibniz theorem, और ये जब आपको मिल जाए तो आपको कैलकुलेट करना है, we have to calculate, hence we have to calculate, evaluate this limit when this x tending to, okay, so we have to evaluate this limit, that is what, this is the limit x tending to 0, and that is your y of n plus 2 divided by yn is just what is the limit we have to calculate. तो पहले तो हमें एक एक्सप्रेशन निकालना है, उसके बाद y n plus 2 upon y n की लिमिट निकालना है. तो लेट्स स्टार्ट. सो गिवन फंक्शन इज व्हाट, y जो है, दैट इज व्हाट, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ x. तो इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिखते हैं. तो दिस डिफरेंशिएटिंग गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x. तो differentiating 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 with respect to x. ओके, तो डिफरेंशिएट जब करेंगे, सो dy dx की जगह पर इसको सिंपली हम y1 लिखेंगे. दिस इज y1, इट मीन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. और साइन इनवर्स x का आप लोगों को पता ही है क्या होता है, 1/√1 - x square. This is the derivative of the sine inverse x. Okay, and from here you can easily see that this will be y1, and this is root of y minus x square is just equal to 1. तो this expression we get from. okay, तो ये एक्सप्रेशन आएगा. इसको फर्दर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे. फर्दर इसका हम डेरिवेटिव लिखने वाले हैं. ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y1 तो मिल गया. अब हमारे टर्म, हमारे एक्सप्रेशन में y2 भी हो, तब उसके बाद हम nth डेरिवेटिव लिखेंगे. तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, देन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, देन nth ऑर्डर डेरिवेटिव. ठीक है, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग 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 1 विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, सो अभी हमारा प्रोडक्ट फंक्शन है, तो प्रोडक्ट फंक्शन वाला हम रूल लगाएंगे. ओके, वी विल अप्लाई द रूल हियर. सो दिस इज, आई एम गोइंग टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस y1, and this is root of 1 minus x square, and here in the right side it will be equal to 0 because 1 ka derivative is constant, it will be 0. So first function, it means the remain same. Derivative of the second function, root of 1 minus x square is there, and then plus root of 1 minus x square is there, and derivative of the second function, it means it will be, you can write it once, इसको आप ऐसे लिख सकते हो. and this implies what, y1 is this, and इसका मतलब है जिसकी पावर है 1/2. हाफ, वो रूट का मतलब है 1/2, तो आई एम टेकिंग 1/2 आउटसाइड. 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 - 1, इट विल बी रिमेन्स. और इसके बाद जब हम इसके 1 माइनस चेन रूल से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो इट विल बी माइनस ऑफ 2x. ओके, plus this is root of 1 minus x square. Okay, that is okay. And this is derivative of y1. y1 already derivative लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर, तो it will be second order derivative. ओके, एंड एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि y इज आल्सो फंक्शन. इसको जरा थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है. यहाँ तो x का फंक्शन है चेन रूल से. ठीक है, तो जब हमने y1 यहाँ पर डिफरेंशिएट करा y1 को, ठीक है, तो y1 को जब हमने डिफरेंशिएट करा तो पहले तो हमने y1 का डेरिवेटिव करा विद रिस्पेक्ट टू, आई थिंक दिस विल बी, नो इट विल बी, ओके 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 विल बी देयर, क्योंकि y1 था, एक बार और करा तो y2 हो गया, तो देयर नो नीड टू बी चेन, अप्लाई द चेन रूल हियर. So this implies what? This is minus का 2xy1 is here, minus का 2xy1 and divided by 2 times root of 1 minus x square, because यहाँ पर
यहाँ पर तुम्हारे पास 1 - x² विल बी रिमेनिंग हियर, और ये हो जाएगा प्लस दिस इज रूट ऑफ 1 - x² एंड दिस इज ऑफ y2 इज जस्ट इक्वल टू 0। ओके, अब इसके बाद हम एलसीएम वगैरह लेते हैं, तो वी कैन कैंसिल इट आउट। तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, दिस विल बी माइनस का x ऑफ y1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा रूट, रूट मल्टीप्लाई होके हो जाएगा तो 1 रूट हट जाएगा, इट विल बी 1 - x² हेयर एंड दिस इज ऑफ y2 एंड डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 - x², राइट साइड में चला जाएगा, इट विल बिकम्स 0। तो व्हाट इज रिमेनिंग हेयर, 1 - x² and this is y2 and this is minus of x of y1 is just equal to 0। दिस एक्सप्रेशन भी है। ठीक है, तो इसको हम अगर इक्वेशन 2 कहते हैं, अब ये जो इक्वेशन 2 है इसका हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तब हमें जो फाइनल एक्सप्रेशन है जो हमें चाहिए वो हम लिख पाएंगे। ठीक है, सो नाउ टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव, taking nth order derivative of 2। ओके, सो जब nth ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो इट विल बी लुक्स लाइक दिस इज nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ 1 - x² एंड दिस इज ऑफ y2, ये हो गया, एंड माइनस दिस इज nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x इंटू y1। तो अब हम इसमें लेबनीज रूल लगाएंगे, तो अब बाई लेबनीज थ्योरम, by Leibniz theorem। Okay, so when you apply this Leibniz theorem, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वही जिस तरीके से एक्सपेंड होता है। आप कोशिश करिए कि आप इसको शॉर्ट में इसका लेibniz थ्योरम का फार्मूला भी लिखिए, ताकि आप जब लिख रहे हो तो आपको गलती ना हो। तो दिस इज u nth डेरिवेटिव ऑफ v एंड प्लस nc1 एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ u एंड n - 1th ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ v एंड सो ऑन, एंड देन v and this is nth derivative of u। okay, we can write like this। so फार्मूला आप साइड में लिख दीजिए एंड देन वी अप्लाई। तो यहाँ पर इस फर्स्ट फंक्शन को u मान लो, दिस इज v एंड सिमिलरली u एंड v, यू कैन जस्ट अप्लाई। तो फर्स्ट फंक्शन इट मीन्स 1 - x² is there and this is nth derivative of y2। okay, plus nc1 and this is first order derivative of 1 - x² is there and n - 1th order derivative of y2, clear, and then plus nc2 and this is second order derivative of 1 - x² and this is d of n - 2th order derivative of y2। एंड इसके बाद का जो टर्म होगा वो जीरो होगा, तो उसे अगर हम नहीं भी लिखते हैं दैट इज आल्सो ओके। ओके, एंड बिकॉज इसका यहाँ पर जो हमारा पॉलिनोमियल है और डिग्री 2 है, और जितना डिग्री होती है उस पॉलिनोमियल की उससे ज्यादा ऑर्डर का अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो जीरो ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट। अब निगेटिव आ गया, तो फर्स्ट फंक्शन इज x एंड दिस इज nth डेरिवेटिव ऑफ y1 and plus this is your nc1 first order derivative of x and this n - 1 order derivative of y1। okay, and then whole thing will be zero because यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर ही पॉलिनोमियल है, फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इट विल बी जीरो इन द राइट साइड। so what it remains here, it will be 1 - x²। okay, and y2 मतलब 2 टाइम्स ऑलरेडी है, n टाइम्स और, तो ये हो जाएगा y of n+2। ओके, nc1 का मतलब होता है n एंड इट विल बी माइनस ऑफ 2x। ओके, एंड दिस विल बी y of n+1 प्लस nc2 मीन्स n - 1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर आ जाएगा -2 बिकॉज -2x इज हेयर, और इट विल बी yn एंड माइनस आ जाएगा माइनस ऑफ yn+1 एंड दिस इज माइनस ऑफ n एंड इसका तो 1 हो जाएगा, और इट विल बी yn इज जस्ट इक्वल टू 0।
ओके, सो क्या मिलेगा हमको यहाँ पर? इट विल बी 1 - x² एंड दिस इज योर y ऑफ n+2 एंड दिस इज माइनस ऑफ 2xn y ऑफ n+1 एंड ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी माइनस ऑफ n, दिस इज योर n-1. ओके, this is your yn and this is minus of x of yn+1 and minus of n of yn. Okay, this will be remaining the same. Okay, so let us see कि हमारे पास क्या रिमेन्स होता है. तो this is 1 - x² and this is n+2 and y, अगर हम इसमें इन दोनों में हम देखें, अगर हम कॉमन ले लेते हैं x और yn+1, तो ये बचेगा माइनस का 2n+1 टाइम्स x ऑफ y n+1. ठीक, और इसमें yn कॉमन ले लेते हैं, तो जब yn कॉमन लेंगे तो इट विल बी रिमेनिंग व्हाट, n² माइनस का n और एक प्लस का n. ओके, दिस इज ऑफ yn इज जस्ट इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास कैंसिल इट आउट. So it will be remain the final expression 1 - x² of yn+2. Okay, minus ka, this is 2n+1 of x of yn+1 minus of n² and this is of yn is just equal to 0. जस्ट इक्वल टू 0. तो यही हमें एक्सप्रेशन निकालना था. 1 - x² yn+2 -2n+1 x yn+1 एंड -n² इंटू yn. तो दिस एक्सप्रेशन वी गेट. अब इस एक्सप्रेशन का यूज करके हमें लिमिट कैलकुलेट करना है yn+2 डिवाइडेड बाई yn. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, लेट्स डिवाइड इट होल विद दिस एक्सप्रेशन, बिकॉज यहाँ पर हमें yn+2 अपॉन yn चाहिए, है ना. तो हम पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं. तो हम जस्ट राइटिंग दिस इज स्टार. ठीक है, तो डिवाइड स्टार बाई 1 - x² yn, है ना. जब इससे डिवाइड करेंगे तो हमको यहाँ पर एक एक्सप्रेशन yn+2 अपॉन yn मिल जाएगा. ओके, सो जब डिवाइड करोगे तो यू विल गेट y ऑफ n+2 डिवाइडेड बाई yn. ओके, एंड माइनस दिस इज 2n+1. Okay, that is okay, x into yn+1 divided by this is 1 - x² and this is your yn, and this is minus of n² and this is yn into 1/1 - x² into yn is just equal to 0. ये हमारे पास बनेगा जब हमने डिवाइड करा. तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा दिस इज yn+2 डिवाइडेड बाई yn जो हमको चाहिए था. यहाँ पर जो बचेगा एक्सप्रेशन दिस इज योर 2n+1. ओके, दैट इज ओके. दिस इज योर x अपॉन 1 - x² दिस. ओके, and this is a yn+1 divided by yn. and यहाँ पर ये yn cancel, this will be n² upon simply 1 - x². It's just equal to 0. Okay, now you apply the limit. Okay, now taking limit, limit x tending to 0. तो हम लिमिट यहाँ पर ले लेते हैं, तो इट विल बी व्हाट, दिस विल बी लिमिट x tending to 0 and this is y of n+2 divided by yn. यही हमें कैलकुलेट करना था. यहाँ पर हम लिमिट जब लगाएंगे दिस इज 2n+1 एंड दिस इज लिमिट x tending to 0 of x upon 1 - x². ये हमारे पास आ जाएगा. और इन दिस ब्रैकेट दिस इज yn+1 divided by yn. ओके, एंड माइनस दिस इज लिमिट x tending to 0 of 1/1 - x², है ना. It's n² is multiplied here, that is okay. So you can see
इसकी तो हमें लिमिट कैलकुलेट ही करना है। दिस इज एक्सटेंडिंग टू जीरो, वाई एन प्लस टू डिवाइडेड बाई वाई एन। ये टर्म तो हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर की लिमिट व्हेन एक्सटेंडिंग टू जीरो इट विल बी इक्वल टू जीरो। और यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ वन हो जाएगा, तो इट मीन्स एन स्क्वायर विल बी रिमेनिंग द दिस वन। ओके, सो दिस implies what? this will be this will be what? This will be your, this is limit x tending to 0, and this is your y of n plus 2 divided by yn is just equal to n square. So basically हमें यही लिमिट कैलकुलेट करना था, तो we can able to find this limit. So it means this limit when x tending to 0, this value will be equal to n square. So this is your answer. ओके, तो आई होप कि समझ में आया होगा कि हमारे पास कैसे हम कोई गिवन एक्सप्रेशन, गिवन इक्वेशन को हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपको मेथडोलॉजी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि हमें कितने टाइम्स पहले फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें, उसके बाद आप nth ऑर्डर को अप्लाई करें। तो अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन, जो भी आपको एक्सप्रेशन, आप जो भी इक्वेशन आपको फाइंड करना है। तो आई होप सो कि ये दो एग्जांपल्स आपको समझ में आए होंगे, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करते हैं, और वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू सो मच।